हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फिटल सर्कुलेशन के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि ड्यूरिंग फिटल लाइफ की प्लेसेंटा विल प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द बेबी बिकॉज fetus lungs are filled with the amniotic fluid, so they does not oxygenate the blood. So all that work is done by the placenta, and placenta will provide that oxygenated blood through the umbilical vein. By the third month जो भी मेजर वेसल्स हैं they will develop and start to function. तो इसमें हम स्टडी करेंगे feto-placental circulation, how placental blood will circulate in the fetus, and from fetus it will revert back into the placenta again for oxygenation. That process we will study in this. So in this temporary structure fetal circulation changes occur at birth. We will study all this here. First of all, temporary structure in fetal circulation. So temporary structure mein first one is the umbilical vein. Umbilical vein carries oxygenated blood and nutrient from the placenta to the fetal body. जैसे कि इस इमेज में भी दिखाया गया है, यहाँ से this is placenta, and from here through the umbilical vein the oxygenated blood will enter into the fetus, and from fetus through two umbilical arteries the deoxygenated blood is again comes back to the placenta. So umbilical vein will carry the oxygenated blood and nutrients to the fetal body. Second structure is the ductus venosus. It means there will be the duct between the vein and the other vein. So in this the duct is present between the umbilical vein and the inferior vena cava. It conveys 80 to 85% of the oxygenated blood from the placenta to the fetus. Umbilical vein is further, when it comes to the up to the liver, it is divided into two branches. First one is the larger ductus venosus, which will bypass the liver and it will transfer the blood to the inferior vena cava, and the other one is the smaller portal sinus. This smaller portal sinus will give oxygenated blood to the liver, and from liver the deoxygenated blood is drained into the inferior vena cava through the hepatic veins as shown here. This is ductus venosus. ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज डक्टस विनोसिस. तो दिस इज द अम्बिलिकल वेन. इट कैरी ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा, एंड हियर इट इज व्हेन इट रीचेस अप टू द लीवर, half of the blood will go through this ductus venosus into the inferior vena cava, and half will go into the liver through the portal sinus. So this blood will provide oxygen to the liver, and from here deoxygenated blood through the hepatic vein. These are the hepatic vein, and this blood is drained into the inferior vena cava. So smaller portal sinus carries oxygenated blood to the liver tissues, and deoxygenated blood leaves the liver through the hepatic veins. ये है hepatic veins के through, and it will drain into the inferior vena cava. So but there will be the mixing of oxygenated or blood here, because some of the deoxygenated blood come from the liver and some will come from the lower half of the body through the inferior vena cava. So there will be the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. But इसकी वजह से क्या होगा, जो blood का volume और pressure है that will increase in the right side of the heart, because from placenta the blood will enter into the inferior vena cava, so the amount of blood will increase. So the pressure during fetal life, the pressure on the right side will be high as compared to the left side of the heart. Then third structure is the foramen ovale. It is oval shape, so it is called as the ovale. So it is the septum which is present between the right atrium and the left atrium, and it is a flap on the left side of the septum. जो flap होगा, that flap is called as the septum primum. Also pressure causes it to remain open, because pressure on the left side will be low as shown in this figure. This is septum primum, which is present slightly on the left side, and this is septum secundum. तो यहाँ पे क्या है कि pressure on the right side of the heart will be high. So whenever the blood will goes from right to the left, it causes this flap to remain open. ये जो flap है
प्रीमम, सेप्टम प्रीमम, तो ये ओपन रहता है ड्यू टू द प्रेशर, बिकॉज राइट साइड में हाई है और लेफ्ट साइड में लो है. द फोर्थ टेम्परेरी स्ट्रक्चर इज द डक्टस आर्टरियोसिस. तो इट इज अ डक्ट बिटवीन द आर्टरी एंड द अदर आर्टरी. तो इट कन्वेज ब्लड फ्रॉम द pulmonary trunk to the descending arch of aorta, and it mainly contains the deoxygenated blood. Then the last temporary structure is the two hypogastric arteries or the umbilical artery. So branches of the internal iliac artery return deoxygenated blood from the fetal pelvis back to the placenta for reoxygenation. So this blood is at least 40 to 45% saturation, and it will go into the placenta for reoxygenation. और reoxygenation के बाद जब umbilical vein के through जो blood आएगा, it is having the saturation of 80 to 85%. Then next one is the fetal circulation. तो फर्स्टली क्या है कि जो हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग फिटल लाइफ लंग्स क्या होते हैं, लंग्स आर फिल्ड विद द एमनियोटिक फ्लूइड से, सो दे डज नॉट ऑक्सीजनेट द ब्लड. सो ऑल दिस वर्क विल बी डन बाय द प्लेसेंटा, एंड फ्रॉम प्लेसेंटा one umbilical vein will carry oxygenated blood by crossing this umbilical ring. ठीक है, umbilicus के थ्रू umbilical ring को क्रॉस करके it will come up to the liver. From liver half of the blood will go into the liver, जो यहाँ चला गया liver में, and half will go into the inferior vena cava through the ductus venosus, and this blood is having the saturation of 80 to 85%. So larger veins will carry blood to the inferior vena cava through the ductus venosus, and the smaller portal sinus will carry blood to the portal to the liver. And from here, from liver through the hepatic vein, this deoxygenated blood will again go into the inferior vena cava. After that, ductus venosus is regulated by the physiological sphincter, which will respond to the changing volume in the umbilical vein. Whenever there will be the decrease in the volume of blood in the umbilical vein, this will constrict. जो ductus venosus है, constrict हो जाएगा. Then जैसे ये ब्लू कलर से दिखाया गया है, दिस इज द पोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड फ्रॉम अम्बिलिकल वेन हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो इनटू द इंफीरियर वेना केवा. सो देयर विल बी द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड. सो हियर अगर यहाँ हम बात करें तो जो सैचुरेशन है ब्लड की, दैट इज 65 to 67% वो सैचुरेशन हो जाएगी, 80 से कम होगी, है ना, बिकॉज देयर विल बी द टू मिक्सिंग ऑफ ब्लड, वन फ्रॉम द हिपैटिक वेन which comes from the liver, and second one is from the lower body part which comes from the inferior vena cava. From here blood will enter into the right atrium of the heart medially. तो दिस जो inferior vena cava का valve है, it will open medially, and the blood will enter directly into the foramen ovale. Maximum blood will go into the लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू दिस फोरामेन ओवेल. तो मैक्सिमम में 60 to 70% जो ब्लड है, इट विल डायरेक्टली गो फ्रॉम दिस ओपनिंग, दैट इज द जो इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग है, वहां से डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, बिकॉज इट विल ओपन मीडियली एंड फोरामेन ओवेल इज ऑल्सो प्रेजेंट मीडियली. सो जो प्रेशर के थ्रू ब्लड आगे पास कर जाएगा. बाकी जो रेस्ट ऑफ ब्लड बच गया, that will go backward. Rest of blood will collect here in the right atrium, and some of the deoxygenated blood come from the superior vena cava, from the upper half of the body. तो upper half of the body में जो used blood होगा, that is deoxygenated blood, it mixes with this blood which is remained in the right atrium, and from here it will enter into the right ventricle. तो ये जो ब्लड बच गया, दैट इज एटलीस्ट 30 to 40% ये ब्लड होता है, बट जो 60 to 70% ब्लड है, दैट इज पास्ड इनटू द लेफ्ट atrium through the foramen ovale, and this blood is having the lower saturation of oxygen. जो राइट एट्रियम में ब्लड बच गया, इट इज हैविंग द सैचुरेशन ऑफ 55% एज कंपेयर टू द ब्लड विच डायरेक्टली पास फ्रॉम द फोरामेन ओवेल इनटू द लेफ्ट atrium, it is having the saturation of 65%.
तो अगर हम बात करें लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड गया उसकी 65% सेचुरेशन है, और जो राइट एट्रियम में ब्लड है उसकी 55% सेचुरेशन है, बिकॉज इट मिक्सेस विद द ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा विच इज डीऑक्सीजनेटेड। फिर नाउ फ्रॉम हेयर जो पहले हम एक साइकिल की बात करते हैं कि जो ब्लड डायरेक्टली फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में गया वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फ्रॉम हेयर इट विल गो इनटू द आर्च ऑफ एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा में चला जाएगा। आफ्टर दैट असेंडिंग एओर्टा में जब गया तो थ्रू दिस सबक्लेवियन आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, द ब्लड विल गो इनटू द ब्रेन एंड द अपर एक्सट्रीमिटी में ये ब्लड चला जाएगा, एंड इट इज हैविंग द हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिकॉज इट इज हैविंग द saturation of 65%. Then next is the blood which enter from the right atrium into the right ventricle will go through the pulmonary trunk. Pulmonary trunk तक गया because lungs are non-functional, filled with amniotic fluid, तो maximum blood will shunt the bypass the lungs through this duct which is called as the ductus arteriosus. तो इसमें जो ब्लड चला जाएगा that is 90% of blood will go through this ductus arteriosus. It is a duct between the pulmonary artery and the aorta. So 90% of blood will bypass the lungs and blood will go into the descending aorta, and only 10% of blood will go into the lungs for its growth and development, because lungs also require oxygen for their development. So 10% of blood will go into the lungs to provide oxygen for its development. सो अगर हम बात करें तो ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है, इट्स पेटेंसी इज मेंटेन्ड बाय द प्रोस्टाग्लैंडिन। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन E1 और प्रोस्टाग्लैंडिन 2, दैट दे विल मेंटेन इट्स पेटेंसी की वो ये इसको डायलेशन करते हैं, दे विल डू द वेसोडाइलेशन। सो ये इसको ओपन करके रखते हैं, इसकी मसल्स को रिलैक्स करके रखेंगे। एंड दिस प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से ये आएगी, इट विल कम फ्रॉम द प्लेसेंटा एंड ऑल्सो फ्रॉम द duct on wall की जो duct है, it will also produce small amount of prostaglandin, because जो यहाँ से ब्लड जाएगा उसकी जो ऑक्सीजनेशन है, सैचुरेशन है, वो कम है एज कंपेयर टू दिस ब्लड है। तो दैट लो कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड विल रिलीज द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड दैट प्रोस्टाग्लैंडिन विल dilate this duct, or it will help in the remaining opening of the duct. After that, rest of the blood will travel to this descending aorta and mixes with the blood from the right ventricle, and this blood is having the saturation of 50%. जो ये descending aorta के through blood आएगा, it is having the saturation of SpO2 is 50%. After that, most of blood passes from the descending aorta to the lower part of the body. ठीक है, this is descending, lower part में आ गया, because इसमें अभी भी स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस 50% ऑक्सीजनेशन इसमें प्रेजेंट है, सैचुरेशन प्रेजेंट है, तो दिस इज सफिशिएंट टू सप्लाई द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. देन रेस्ट ब्लड विल पास into the umbilical artery from the branches of the internal iliac artery and goes into the placenta. Again, it will go into the placenta for reoxygenation, and जो यहाँ से blood आया, it is having the saturation of 40 to 45%. बहुत low concentration रह जाएगी, because umbilical vein के through जो blood आया, it is having the saturation of 80 to 85%, और जो वापस umbilical arteries के through जो blood placenta में जाएगा, it is having the saturation of 40 to 45%. So placenta again reoxygenate blood and repeat the cycle. This is the fetal circulation. So in this we will also study regarding fetal circulation. यहाँ पे देखो placenta है, this is placenta. placenta के through जो blood umbilical vein में आएगा, that is having the saturation of 80 to 85%, and from here through portal sinus this blood will enter into the liver to provide oxygenated blood to the cells and nutrient to the cells, and from here through hepatic vein the deoxygenated blood enters into the inferior vena cava, and from umbilical vein a duct
which is called as the ductus venosus, which will bypass the liver. It will provide oxygenated blood will be drained into the inferior vena cava. From inferior vena cava, the blood will enter into the right atrium of the heart, and the blood which is present in inferior vena cava, it is having the saturation of 65%. inferior vena cava के blood की saturation कितनी होगी? 65%. After that, the blood will go into the right atrium. बिकॉज मैंने आपको फिगर में भी दिखाया था कि डायरेक्टली जो ये इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग है इट इज प्रेजेंट मीडियली, सो द ब्लड डायरेक्टली पास फ्रॉम दिस मीडियली ओपन्ड इंफीरियर वेना केवा इनटू द फोरामेन ओवेल एंड इनटू द लेफ्ट एट्रियम. सो फोरामेन ओवेल के थ्रू जो ब्लड चला गया, कितनी क्वांटिटी जाएगी? 60 to 70% ऑफ ब्लड विल एंटर इनटू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू दिस फोरामेन ओवेल एंड इट इज हैविंग द बेटर ऑक्सीजनेशन. तो अगर हम सैचुरेशन की बात करें, इट इज हैविंग द सैचुरेशन ऑफ 65%. फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा, deoxygenated blood will also enter into the right atrium and it is having the saturation of 55%. जो रिमेनिंग ब्लड वहाँ पे बच गया तो उसकी सेचुरेशन 55% है. तो 30 to 40% जो ब्लड है इट इज हैविंग लेस ऑक्सीजनेशन एंड एंटर्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट विल एंटर इनटू द पल्मोनरी ट्रंक. तो पल्मोनरी ट्रंक से भी अगर हम बात करें, 90% ऑफ ब्लड विल बाईपास द लंग थ्रू द डक्टस आर्टरियोसिस एंड दिस ब्लड विल गोज इनटू द डिसेंडिंग एओर्टा. डायरेक्टली ये लंग को बाईपास करके कहाँ चला जाएगा? डिसेंडिंग एओर्टा में चला जाएगा. एंड ओनली 10% विल गोज इनटू द लंग्स बिकॉज ब्लड इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लंग. सो 10% विल गो इनटू द लंग एंड थ्रू लंग्स पल्मोनरी वेन्स के थ्रू इट विल कम इनटू द लेफ्ट एट्रियम. And from left atrium, the blood with a saturation of 65% means high saturation के साथ वो blood left ventricle में जाएगा. left ventricle से aorta में, aorta से जो ascending aorta है, ascending aorta will provide blood to the brain or the upper extremities. After that, this ductus arteriosus will attach with the descending aorta and it is having the saturation of 50% and it will go into the systemic circulation. So 50% saturation is enough to provide oxygen for the rest of the half of the lower body. And from here through umbilical artery, which is a branch of the iliac artery, internal iliac artery, and this blood will enter again into the placenta for reoxygenation and this blood is having the saturation of 40 to 45%. So this is all about the fetal circulation. Now we will study regarding the cardiac output during fetal life. The cardiac output is 350 ml per minute and after birth it is increased, that is 500 ml per minute and the heart rate is 120 to 140 or up to 160 beats per minute. Then third one we will study regarding the changes at the birth. So there will be two main triggers which will induce the structural changes in the circulation. First one is the cessation of placental blood flow, initiation of the respiration. बच्चा खुद में breathe करना वो start कर देगा. तो that are the two main trigger which will cause the changes in the circulation. Then firstly, जैसे कि umbilical cord clamp हो गई, after that baby start to breathe and there will be the expansion of the lungs. So uncoils pulmonary capillaries of the lungs. Normally lungs are filled with the amniotic fluid and there will be the increase pulmonary resistance. ठीक है, पल्मोनरी रेजिस्टेंस बिफोर बर्थ क्या थी? ज़्यादा थी, बट आफ्टर बर्थ क्या हुआ कि जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो क्लियर हो गया एंड जो कैपिलरी पे एक प्रेशर था, कैपिलरी कंप्रेशन था, वो कम हो गया, विच विल लीड टू द डिक्रीज पल्मोनरी कैपिलरी रेजिस्टेंस. सो फॉल इन द प्रेशर ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट. जब अम्बिलाइकल कॉर्ड क्लैम्प हो गई तो क्या है कि जो ब्लड अम्बिलाइकल वेन के थ्रू सर्कुलेशन में आ रहा था वो नहीं आएगा, तो प्रेशर विल डिक्रीज ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट
एंड देयर विल बी द फॉल इन द पल्मोनरी वेस्कुलर प्रेशर। जो मैंने आपको बताया कि पहले कि एमनेटिक फ्लूइड से फिल्ड थे लंग्स, तो क्या था, जो पल्मोनरी रेजिस्टेंस थी वो ज़्यादा था, बिकॉज जो पल्मोनरी वेन्स थी, वेसल्स थी, वेस्कुलेचर था, वो कॉम्प्रेस्ड था। बट जैसे ही प्रेशर रिलीज हुआ तो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और इंक्रीज ब्लड फ्लो टूवर्ड द लंग की तरफ को ज़्यादा फिर ब्लड जाएगा। एंड सेकेंड वन क्या हुआ, बिकॉज देर विल बी द क्लैम्पिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, नो ब्लड एंटर into the ductus venosus and further reduces pressure in the right side of the heart. So ductus venosus constrict. तो जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ductus venosus किसको रिस्पॉन्ड करता है, it will remain open due to the physiological sphincter which will respond to the changing volume in the umbilical vein. कि जैसे ही umbilical vein का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, जो ductus venosus है that will constrict because वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, and after few days or week permanently close. The remnant which is present is called as the ligamentum venosum. Then after that, जैसे ही pulmonary vascular resistance decrease हुआ, blood is drawn into the pulmonary capillaries. Pulmonary capillaries में blood जाना start हो जाएगा और lungs will oxygenate the blood, and that blood will return back into the left atrium by the pulmonary veins, because अब पल्मोनरी कंप्रेशन कम हो गया है, पल्मोनरी कैपिलरीज में ब्लड जाएगा और वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ब्लड विल मूव. Then increases systemic vascular resistance. अब right side में pressure will decrease and pressure will increase on the left side, so there will be the increase in the systemic vascular resistance. Ductus arteriosus has left to right blood flow. अब क्या होगा, नॉर्मली क्या था कि डक्टस जो आर्टेरियोसिस था, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू डायरेक्टली ब्लड लंग्स को बाईपास करके कहाँ जा रहा था, डिसेंडिंग एओर्टा में जा रहा था. बट अब क्या होगा कि एओर्टा के थ्रू ब्लड आएगा और डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू वो पल्मोनरी ट्रंक में आएगा ब्लड. तो इट इज हैविंग द हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. पहले क्या था, जो ब्लड फ्लो करता था दैट इज हैविंग द लो ऑक्सीजन सैचुरेशन, सो देयर विल बी द रिलीज ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन. बट अब क्या होगा, हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल come through this ductus arteriosus and there will be the decrease in the level of the prostaglandin and increase in the oxygen concentration. तो ये रिवर्स हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज हो गई और प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज डिक्रीज हो गया, which will cause the contraction of the smooth muscle and the ductus arteriosus. तो यहाँ पे भी दिखाया गया है, देखो कि नॉर्मली जो ब्लड फ्लो करता था डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू डायरेक्टली कहाँ जाएगा, डिसेंडिंग एओर्टा में. बट हियर आफ्टर द बर्थ क्या होगा, लंग्स में ब्लड जाएगा और लंग्स के थ्रू कहाँ गया, यहाँ आ जाएगा, ठीक है. आफ्टर दैट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू वो फिर दिस डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू वो फिर ट्रंक में आएगा. जैसे ही ये रिस्पॉन्स होगा, ये जो ब्लड होगा, इट इज हैविंग द हाई ऑक्सीजन सैचुरेशन और देयर विल बी द डिक्रीज इन द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन. सो और क्या है, थर्ड, तीन चीज़ें यहाँ पे होगी. एक तो ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल डिक्रीज हुआ. थर्ड वन इज द ब्रेडिकाइनिन, बिकॉज नाउ lungs will release the bradykinin and this bradykinin will also cause the constriction of this ductus arteriosus. So there will be the closure of the ductus arteriosus and after that the remnant present is the ligamentum arteriosum. Then third response is whenever there is increase in the systemic resistance, increase in the left atrium pressure as compared to the pressure in the right atrium. तो नॉर्मली हमने ड्यूरिंग फिटल लाइफ क्या पढ़ा था कि राइट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज्ड है और लेफ्ट साइड का कम है. तो जैसे ही ब्लड फ्लो करेगा ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये जो प्रीमम है, सेप्टम प्रीमम, इट विल रिमेन ओपन. बट नाउ लेफ्ट साइड का प्रेशर क्या हो गया, हाई. लेफ्ट साइड प्रेशर इज हाई एंड राइट साइड का क्या है, डिक्रीज है. तो ब्लड विल फ्लो फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन एंड दिस सेप्टम प्रीमियम विल क्लोज, ये क्लोज हो जाएगी. सो कॉजिंग द क्लोजर ऑफ द फोरामेन, ओवेल
and the remnant present is the foramen ovalis. Then changes in the fetal circulation after the birth, जो हम ductus arteriosus की बात कर रहे हैं, तो इसका functional closure will occur within the 10 to 96 hours after birth, and anatomical closure will occur 2 to 3 weeks after the birth, and the remnant present is the ligamentum arteriosum. Then second one is the foramen ovale. It will close, that is functional closure will occur within the several minutes after the birth, and anatomical closure will occur within 1 year after the birth, and the remnant present is the fossa ovalis. Then third one is the ductus venosus. Functional closure will occur within the several minutes after the birth, and anatomical closure within 3 to 7 days after the birth, and the remnant present is the ligamentum venosus. Same, foramen ovale, remnant is foramen ovalis. Ductus arteriosus, remnant is ligamentum arteriosum, and ductus venosum, जो remnant है that is ligamentum venosum. And umbilical arteries, remnant is the medial umbilical ligaments, and the umbilical vein and the remnant is the ligamentum teres. So this will all about the fetal circulation.